ये नए भारत के नए स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कंपनी की ओर से जियो फोन नेक्स्ट की मेकिंग का एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें ये फोन कैसे भारतीयों के जीवन को बदलने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ताकत रखता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जियो ने मेकिंग ऑफ जियो फोन नेक्स्ट की फिल्म रिलीज की है, जिसमें जियो फोन नेक्स्ट के फीचर, फोन लॉन्चिंग के पीछे के विजन और आइडिया के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें नई खोज के हजारों साल के भारतीय इतिहास, संपन्न धरोहरों और भविष्य की तैयारियों की भी चर्चा की गई है। We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform India that motivated Reliance to invest in this space. And Jio is the result. I believe in the next 20 years, as a human civilization, we will collectively achieve more than what has been achieved in the last 300 years. We are at the beginning of a new era. जियो के आने के बाद डेटा उपभोक्ता के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में 155वें पायदान से लेकर पहले स्थान तक आने का सफर तय किया है और अब जियो फोन नेक्स्ट ये फोन हर भारतीय को बढ़ने के समान अवसर मुहैया कराने वाला है, क्योंकि ये फोन मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। Our vision was very clear. We wanted to connect every Indian in the country, and we wanted to do so in an extremely affordable way. No Indian must be left behind. What we needed was a world-class operating system that gave the user a seamless digital experience, but was extremely affordable to make. So, we had to think out of the box. Jio's vision for India resonates with Google's, and it was clear we needed to innovate and create an experience tailored to India's new internet users. This was extremely challenging. But when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivated us to go beyond, push the limits, and make this possible. Pragati OS, Pragati stands for progress, is powered by Android, is a result of this passionate effort, bringing together the best minds at Jio and Google. I am so proud of this new OS. All of us are. It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language and the phone will translate that into another language. Not just this. With the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. Now that we have a truly delightful operating system experience on board, we needed another key component of the phone to be just right. And you guessed it, the processor. And who better to make processors than Qualcomm? The Qualcomm processor on the Jio Phone Next focuses on delivering optimized connectivity and location-based technologies that form the backbone of many applications today. Further optimizations in audio and battery will make this smartphone a real user-friendly multitasking device. Now, with the optimized version of Android, a powerful processor at its center from Qualcomm, the Jio Phone Next was ready to be put together right here in India at Tirupati and Sri Perumbudur. This facility includes the latest technologies in the EMS. These technologies will bring us the best quality and the best productivity in the market. And our goal, together with Jio, is to bring this smartphone to everyone. We are the first of the history. We are converting a bigger population into the digital world. The Made in India is the game changer for us. It is very much required for India. That is what's happening right now. Make in India and make for India. Google Android ने जियो फोन नेक्स्ट में भारत के लिए खास प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है।
जिसके साथ जियोफोन नेक्स्ट में बेहतरीन कैमरा, वॉइस असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, दमदार प्रोसेसर और शानदार बैटरी के साथ कई और खूबियां भी मिलेंगी। कंपनी के मुताबिक जियोफोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार बनेगा। The JioPhone Next will help our nation become more and more Atmanirbhar. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।